girl, she has issues with the way the teeth are, with the way her jaws are. There's a severe imbalance, as you can see. So if you look at this, her mandible is really retruded and she has protruding bimaxillary protrusion, and you can see the angle and everything. She also looks a little bit aged. So we're going to be doing jaw surgery for her. So you can see how the teeth are. She also has a gummy smile. We're going to be working on the upper jaw, lower jaw, both at the ramus and also on the chin, to advance and to improve the facial proportion and the facial balance. So this is pretty much going to be like a face makeover surgery. We're planning osteotomies first up. We're also going to be working on the base of the nose. I'm going to be doing little work here, some tip work here. So we're going to give her a better proportional, functional result all in one go. We're also planning her anesthesia via a submental intubation. She's going to be in this region, actually a transmalar heart, so that the entire face is open for us for her surgeries. She would stay over with us for about a week after surgery. I think we'll follow you up with her every single day or every now and then, so you know how the transformation has occurred and how she is by the time she's ready to go home. Let us scan. So you can see the scan, how concave her profile is, how convex the profile is. So we'll have to do major work right at the ramus, right at the angle, and also at the chin. She doesn't have any of the functional issues though in terms of opening and chewing, but we're going to put both these jaws in a much better proportion, much better position. All right. तो आपका सर्जरी शायद परसों होगा। आज तो आए आप, आपका काम आज चालू है? हाँ, कन्याकुमारी हॉस्टल से निकल गया है। अरे नहीं, पास में होटल है, वहाँ रह जाओ। परसों करेंगे सवेरे। कल नहीं, कल कोई और पेशेंट है, मेरे को पूरा दिन निकल जाएगा उसमें। परसों करेंगे। आज सब रेडी होना, आपका काम है। आप अभी निकाला आपका मेजरमेंट, एक दिन लगेगा हमें पूरा रेडी करने के लिए, कम से कम। कल शाम तो हो जाएगा उसी में, परसों सवेरे करेंगे। Hello everyone, we are in the pre-operative arena and we have this young lady with us. Dr. Richardson has already seen the case, in fact discussed it. You will further see in the videos as to how he has started the treatment plan for her. When the patient came, there are very few classical signs or points which we can note. The first being, she has a rudimentary chin. I say rudimentary because the chin is almost non-existing. If you turn to one side, we can see the chin is almost non-existing. It's giving the appearance almost like a bilateral TMJ ankylosis. However, she doesn't have a defect or the deformity with the joints. Her condyles are fine. The second thing which we can notice is there's a vertically maxillary excess. By vertical thoda seedha dekhoge, vertical maxillary excess, I mean the distance of the upper lip or the upper jaw is way too high. That is clearly indicative of the way she smiles. Hima, aap thoda smile karke dikhao, jitna full blown maximum smile. So we see she has a gummy smile and her maxilla is clearly protruding out. There's an increase in vertical length, as we can clearly see from the base of the nose to the upper lip. Also with the lower jaw, when she bites, normal चबाओ जैसे आप खाना खाते वक्त चबाते हो, yes. बंद करो मुंह और थोड़ा सा ई करो, जैसे फैल जाता है ना,
That's it. That I can show you in the pictures that we have. It will be clearly visible. Yes, so this is how the patient bites. The bite, this is called as a deep bite. I say deep because the upper teeth are completely camouflaging the lower ones. So the lower incisors are not visible. This is called as a deep bite. Also, she has an increase in overjet. By overjet, I mean when she bites, the distance between the upper and the lower teeth is more than the usual, which is more than 2 millimeters. So she is a case of VME, which is vertical maxillary excess with respect to the smile, the gummy smile. The height of the maxilla is more. The chin is small, it's rudimentary. As we can see, अगर आप एक side पे turn होगे, it's almost like a negligible, non-existing chin, even though it's giving like a bilateral TMJ ankylosis appearance. But she is not having any joint deformity. This is how she has been. आपने कोई तार का treatment किया है हेमा इससे पहले? braces लगाया है? कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया. This is the first time ever she is coming for a surgical intervention, and they have been told repeatedly prior that surgery is the only option for her for facial improvement, for functional as well as for aesthetics. We'll see as to how the surgery goes in detail. Thank you. So here we are post-op day 5 after a bite jaw surgery. We've done a lipo 1 superior impaction, also extended genioplasty with a SAG. So multiple surgeries, and this is the outcome. She was having extremely retruded chin, almost looked like an ankylosis patient if you had a look at her first. Now she has a chin which is proportional to her face. We have augmented it both in the vertical and horizontal dimension. Also took her maxilla, impacted it upwards, moved her mandible forward. So overall, according to the surgeries performed, her edema is almost minimal to nil at present. But again, here there is slight edema. It should settle. If you see her occlusion, it is perfect, both sides occluding properly. She will be having some transient paresthesia over the chin because of the mental nerves being retracted and being adapted to the new position. It is transient, and she will, it is showing improvement as days pass by. But if you notice, she's been drooling a little bit. That is because of the lack of sensation here over the lower lip. But apart from that, she's actually fit for discharge, scheduled for discharge today. And we will be seeing her again after 2 days. We'll be removing all the bags, and then she can go home. आप ठीक हो? कहाँ पे दर्द लग रहा है? एक मिनट, बंद कीजिए. अभी बंद हो रहा है ना? बंद हो जाता है कभी कभी बंद हो जाता है. बंद हो जाता है. हाँ, बंद हो हाथ हटाओ. ये मुंह के अंदर से क्या निकल रहा है? एक मिनट. इधर और निमिष ले, यहाँ पे रखो. सक्शन था इधर को लो ना.
A major procedure for her. Huh. So you can see this. So this was the before, and you can see the improvement. Yes, she's in some amount of pain because I've just done a dressing here, and there's still some swelling. Band karo beta. So when she's, biting, she looks much better. At the photo cut, side photo cut. You can see that. This is the place where you will see the dramatic improvement. You can see that face. We've got the entire lower jaw reconstructed. While here you don't see the lower jaw at all. So this is the same girl, and you can see how the lower jaw has been improved. Tarida. So you can see the difference. आपको लग रहा है फर्क? बहुत अच्छा है. धन्यवाद. और आपको हाँ नहीं शुक्रिया. अरे नहीं ऐसा मत बोलो. अच्छा देखो ये, और जब इनको अच्छी तरह से सेट होगा ना और अच्छा लगेगा. अभी सिर्फ 10 दिन हुआ है, और अगर आपको 1 महीना लगेगा, 2-3 हफ्ता, बढ़िया हो जाएगा और भी. और ये धीरे धीरे बंद भी होगा. देखो अभी थोड़ा खून आ रहा है अभी भी. देखो ना, इसकी वजह से तो जो गौ सिड़ता है ना के आज जा रहे हो आप? ठीक है. मैडम कटवा दी, कटवा दी. हाँ कहीं कटवा दी. काट दो. ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा है. बंद करो, बंद करिए बेटा. हाँ. और आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे आप आपके शहर जाएंगे, गांव जाएंगे, वहाँ पे तार लगाओ दांत के लिए, ब्रेसेस. आप अभी नहीं, 2 महीने के बाद थोड़ा और अच्छा हो जाएगा. और जब ये पूरा सूखेगा ना तो ये ऐसा हो जाएगा बिल्कुल. तो फिर देखिए कितना फर्क. हाँ ऊपर लगा के भी था. दोनों लगाना है. वो आप वहाँ पे कोई डेंटल के पास जाओगे ना, आपको मालूम पड़ेगा. 2 महीने के बाद. हाँ 2 महीने के बाद. और आप फ्रंट व्यू भी देख सकते हैं, इसमें इनका कितना इम्प्रूवमेंट है. आपको बहुत दर्द हो रहा है अभी भी? कहाँ दर्द हो रहा है ज़्यादा से? ठीक हो जाएगा. ठीक है. शी स्टिल हैविंग पेन बिकॉज it's been about 8-9 days now, and it was a very major procedure. We've augmented the lower jaw 2 levels, both the ramus, also at the chin, and therefore you can see the improvement. She literally had an Andy gum kind of a deformity. You can see this from there to here, and now her lips are a little bit loose because she's not able to tighten it for the moment, but after a few weeks it's going to be really nice. It's going to work. Side view once more. Beta band karo. And these entire lower jaw, you can see the before. Literally there was no lower jaw, and there was straight line from the lower lip onto the neck, but now you can see there's a nice line. We have a chin neck angle, and yes, all right. आप ध्यान से चलो. मेडिसिन कुड़े उंगली के अंजलाल कुड़े, एंड इसको मुंह के अंदर डालना है हर रोज 2 बार. हाँ ये जो अंदर से पूरा. और ये देखो काफ़ी मतलब वीक है, तंदुरुस्त नहीं है, कमज़ोर है. तो इनको इनके पास रहना है, अकेला नहीं छोड़ना ट्रेन में, तो जाके गिर सकती है कहीं. हाँ अकेला नहीं छोड़ो 1 हफ्ता के लिए. और अच्छा आइसक्रीम दो इनको खाने के लिए, सूप वगैरह अच्छा खाना देना. दूध दे सकते हो, लेकिन सिर्फ दूध से नहीं हो पाएगा. ज़्यादा कुछ सब देंगे इनको. घर जाते ही पूरा मिक्सी में ध्यान से लेके जाना, गिरना नहीं चाहिए कहीं, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर है. ठीक है ना. भात रोटी सर कुछ नहीं खाएगा अभी. हाँ खाना से खाएगा. रोटी खा सकती है, लेकिन नहीं, थोड़ा ध्यान से. ज़्यादा चबाने से इनको दर्द होगा. पूरा बुक आपका फिर. हाँ हो सकता है. मिक्सर मशीन में, मिक्सर में डाल के कर सकते हो. अब कब पहुँचेंगे वापस आपके घर? 3 दिन के बाद. 3 दिन के बाद. तो अगर ये बहुत कमज़ोर है तो आप यहाँ रह सकते हो, क्योंकि मेरे को इनको देखने से कमज़ोर लग रही है काफ़ी. इतना कमज़ोर में ये 3 दिन का ना. संडे का सर हम लोग हवड़ा में रुक जाएंगे.
रुक जाओ। बाइक के। अभी क्या है ना, ये इन अगर 2 दिन और छोड़ोगे ना तो इनका थोड़ा तंदुरुस्ती बढ़ेगा, फिर ये जा पाएंगे 2-3 दिन का सफ़र। हमारा हम रुक जाएंगे सर कलकत्ता में, कल यहाँ से टिकट सर कंफर्म हाँ। टिकट नहीं मिल रहा है नहीं सर, मिल रहा रुक है। जाते हैं। रुक जाते हैं। टिकट ट्राई किए, टिकट नहीं मिला, हाँ। 10 दिन के बाद मिल रहा है। उसके बाद टिकट से हम कल लोग प्रयास करें कि जाएंगे 3-4 5 बजे नहीं। भोर में से टिकट है, ये कन्या आज का जी सर जी 5 बजे भोर में है कन्याकुमारी। आप जा पाओगे सही सही इनको लेके ध्यान से? हाँ, चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं कोई हाँ? दिक्कत नहीं, कोई होगा। रास्ता के दवाई सर दवाई सुइया वो सब मिल जाएगा, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ 5 days ಕೊಡ್ಕೋ, IV ಇಲ್ಲ, ओरल वो सब मिल जाएगा आपको। और बॉक्स कोड सिर्फ ये चाह रहा है, ये आएगा बाद में सही हो जाएगा। ठीक है चलो, बंगाल में इसमें कोई दवा दी सुइया सब मिलेगा अभी आपको दवा। अमृतसर से डॉक्टर है, ऐसा एक बॉक्स भी लेके लिए जाओ। हैं, Google ले लो। तीन ठो ले लिए। अच्छा निकाल लो, ठीक है। ध्यान से चलो इसको हमेशा पकड़ के, हाँ और ट्रेन में आइसक्रीम वाइसक्रीम दे दो उनको। हाँ, हाँ। अच्छा है, ठीक है बाय। अरे सर आपको मिलेगा आपसे नहीं मिलना है, अगर आप आओगे तो मिलेंगे। हाँ ठीक सर। कोई तकलीफ होगा तो आ सकते हैं नहीं? हाँ आ सकते हैं। सर वीडियो कैमरा सर वीडियो में तुम भेज दोगे। वीडियो चाहिए आपको, आपका नंबर दो, वीडियो दूंगा। वीडियो हाँ